So last time we have learned about the basic of derivative analysis. Okay, so we'll continue today with the same topic. My screen visible to you? Yes, sir. Okay, okay. So last time told you that derivative basically is a contract and a contract between two counterparties. When one party is bullish about the market and second person is the bearish about the market. Okay, and we have discussed these things. Okay, Okay. so as I have told you that derivative contract can be made on different kind of underlying asset. It Okay. can be uh, equity derivative, it can be commodity derivative, it can be currency derivative, it can be interest rate derivative, or it can be forex derivative and crypto derivative as well. Okay. Now you can see now NSC website is working properly. So we can see that if you go to this section, derivatives. Okay. This is the derivative market. And if you click here, you can see these are the different kind of segment. First one is equity derivative, second one is currency derivatives, third one is commodity derivative, and fourth one is interest rate derivative. The first thing is equity derivative. In the equity derivative section, we have future and option contract. So these are the different kind of future contract we have. The stock future, the stock option. Then all the indices of NSE like Nifty 50, future, Nifty 50 option. Next Nifty future, next Nifty option. Bank Nifty future, Bank Nifty option. Fin Nifty future, Fin Nifty option, and Mid Cap Nifty future and Mid Cap Nifty option. So these are the option and future contract for the equity derivative segment. For the currency derivative, these are the currency derivative options we have. Like these are the Indian contract and these are the cross currency contract. In Indian contract, we have USD INR, we have Pound INR, we have Euro INR, we have Japanese Yen with INR. These are the pair with Indian currency. And these are the cross currency trades. Cross currency, we have USD to Japan, Euro USD, Pound USD, and so on. So on every contract, we can see there is an expiry date. There is a different kind of data available. Okay. Same thing we have commodity derivative. The commodity derivative, there are only few or limited contracts are available over NSC exchange. So you can see these are the commodity contract. So we have like gold, silver, copper, aluminum, zinc, limited derivative contract here. Same way we have interest rate derivative as well. Now, on the another hand, we have a specific website, as I've told you, it is MCS. The last time this website was also not working. This is a specific exchange for the multi commodity exchange, like commodity market. So we can trade, these are the different products we can have. One segment is the bullion segment, second one is the base metal, third one is the energy sector, and fourth one is the agro commodity sector. In the bullion market, we have gold, the contract of gold. So gold K, we have five contract: gold major, gold mini, gold 10, gold guinea, and gold petal. Same way, we have silver contract: silver major, silver mini, silver micro, and silver 100. These are the base metal: aluminium, aluminium mini, copper, lead, lead mini, nickel, rubber, zinc, and zinc. These are the energy sector. In energy, we have crude oil, electricity, and natural gas. And these are the few agro commodities. So we have a specific exchange for the agro commodities, but few agro commodities are traded on MCS exchange as well, like cardamom, cotton, cottonseed, crude palm oil, kapas, and mentha. And as I've told you, there is another exchange that is NCDEX that is specifically for the agro commodities. Now you can see these are the products, like you can see like crude oil, groundnut oil, custard oil, soybean, mustard oil, chana, bajra, wheat, moong, kapas, cotton. So these contract, then we have spices like turmeric, coriander, zira. Then one metal sector is also there, steel long. Then we can have the contract of gold and
These are the different kind of contract, mustard seed, soya seed, and so on. So these are the agro commodities, and these agro commodity are specifically trade on NCDEX, National Commodity and Derivative Exchange. So we have four exchange: NSE, BSE, MCX, and NCDEX. NCDEX specifically for the agro commodity, MCX specifically for the commodity market, and NSE and BSE for the equity derivative. And we have another section, that is interest rate derivative. तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, लाइक दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्यूचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑप्शन, 91 ट्रेजरी बिल, ओवरनाइट माइक्रो फ्यूचर, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट. तो right now these contracts are not so much liquidity. We have very limited liquidity in these contracts. Okay, so normally we don't go for this, we only go for this commodity and equity derivative. So as I've told you, there are two main segments in the equity market. One is future contract and another one is option contract. So now I'm going to cover with the future contract. So in the future contract, as I've told you, is a contract between two counterparty. So one party is bullish about the market and second person is the bearish about the market. Only then they can make a contract. So that's why we call it counterparty. Okay. One party is bullish about the market and second one is the bearish about the market. So as I have told you, it's a contract, so it has an expiry day as well. So contract will expire on a particular date. As I have told you, it would have a monthly expiry. Monthly expiry on last Tuesday of every month. Okay. So expiry would be on last Tuesday of every month, and as I have told you, we have 3 month expiry. So there are three circles: June, July, and August. So at the same time, we can make a contract for the current month. The current month expiry is known as near month. This is known as near month. Next month would be known as next month. And third one would be known as far month. This is known as far month. So at the same time, if you want, you can make the contract for the June month. If you want, you can make the contract for the July month. Even if you want, you can go for the August month. Okay. So every last Tuesday of a specific month, there would be the expiry. The future contract have only the monthly expiry. We don't have the weekly expiry for the future contract. Okay. Now we can see we have two options. Either you can go for stock future or you can go for index future. So index future, we have Nifty, Bank Nifty, Nifty Finance, Mid Cap Select, Next Nifty. These are the 5 contracts available for the NSE exchange. Okay, index future. So we can make future contract. Same way, and for the BSE, we have Sensex future and Bankex future. Okay, and stock, we have around 220 plus stocks in which we can do the future and option trading. Okay, so you can make the contract for the future of a stock, and you can, if you want, you can go for the any of the index: Nifty future, Bank Nifty future, Fin Nifty future, Mid Cap Select, and so on. Then every contract has a lot size. Lot size means minimum quantity you have to buy. For example, the lot size of Nifty is 65. So one
lot, I would say it would be the quantity of 65. So if you go for any particular share like Infosys, so Infosys has a lot size of 400. So it would be equal to the 400 share, the quantity of 400 share. Okay. So Nifty has a lot size of 65, same way Sensex has a lot size of 20, and so on. Other index have their specific lot size. So we can only buy in the lots. We can buy either one lot, two lot, three lot, in the multiple of lots. You can go for one lot, 10 lot, 100 lot. It's all up to your choice. Okay. Then here you can see these are the different kind of contracts for the future contract. Now we can go for Nifty future. So if you click here on the NSE website, now you can see there are the contract available for the Nifty for the 30th June, that is the current month expiry. ठीक है, last Tuesday of, ठीक है, same way 28 July and 25th August. Now you can see there are different kind of price. Now you can see Nifty is right now trading at this price 24056. This price is known as the spot price. So we have spot price. Price means the current market price, the current price of the Nifty, where Nifty is trading right now. ठीक है, ठीक है, और you can call it live price. This is live price. अभी जो price चल रहा है, ठीक है. So this is price is known as the CMP, current market price. You can call it current market price. You can go for this. You can call it spot price. Now we can see the future price. This is the price of future. The future price is different. Spot price, and second one is the future price. The future price, we have the different price for the different month expiry. If you want, if you can see here, it is 24,112, it is 24,167, and it is 24,280. So you can see there are a price difference in all these price. So if you would like to buy right now in the cash market, you have to pay for this. If you would like to buy a future of this, the price would be this. And if you would like to buy the future of the July month, the price would be this, multiply by the lot size. And if you want to buy for the August series, you have to pay according to this. Okay, so the value of the contract would be like 24112. Okay, so for example, if you can say 24112 is the future price, so the amount would be like multiply by the lot size. So you can see like price should be around 24,112 multiplied by 65. The contract value of this like 15 lakhs 67,280. This is the contract value. Okay, you can call it the contract value. Okay, so this is how it is calculated. This is the contract value. Okay, so this is the price of the future, and this is the spot price, and this is the lot size. So we have multiplied future price with the lot size, so we can see this is the contract value. But for this contract value, you have to pay only the margin which is required to maintain this position is, you can go for another website I have told you, is zero the margin calculator. So you can go here and Nifty. Okay. And so if you want, you can buy. If you want, you can sell. So if you click here, you have to pay only 1,77,050 only. So this would be my total margin. This is my total margin which I have to pay at the time of making a contract. So for this amount, the contract value is this. I am just paying this much amount. Okay, and that is include both things. Like this is my span margin,
This is my span along with the exposure. The total margin include span margin along with the exposure margin. Okay, like this. So span margin plus exposure margin equal to the total margin. So this is the total margin you have to pay to make a contract of this value. Okay, so this is the initial amount you are paying at the time of making a contract, and the contract value is this. So if the price of the Nifty increase, as I have told you, this is a contract between the two party. So one party is paying buying, is bullish about the market, second party is bearish about the market. So if the price of the Nifty or underlying price is moving upward direction, you can see the price is increasing. So for every single rupee increase in the spot market, the future price will also move according to that. So if the future price would change, and for example, if I say it will become 50 point plus 24152 sorry. So if it is increased by 50 point, the profit would be 65 multiplied by the 50. 65 is the lot size. For every single rupee, you will earn 65 rupees. For 1 rupee change, for 10 rupees, for 10 pint, you will get this. For 100 pint, you will get this. For 200 pint, you will get the profit of this. Okay. Same way for loss. So if the Nifty price is decreasing by 1 rupee, you have to, there would be the loss of 65 rupees. If the price of the Nifty is declined by 10 rupees, the loss would be 650. If the price of the Nifty is declined by 100 point, there would be the loss of 6500, and so on. If the price is decreased by 200 point, the loss would be 13,000. So the profit and the loss both are in the same ratio. So if you are making the profit of 6500, so if the market is not going in your direction, the loss would be the same ratio. Okay, so this would how the market react according to the future. Now we can see these are the different kind of data available. Like this is the expiry date, this is the LTP, this is the change in the price, this is the open price, high price, low price. Okay, open, high, low. Market is now right now not closed. Still there are 15 minutes. Okay. Now this is the contract volume, contract value, open interest of these contract, and this is the underlying asset. Underlying value is this. Okay, this is the spot price you can see, and LTP is this. Okay, so according to the underlying price move, the price of the future will also move. Now you can see these are the different kind of contract available for. You can go for next Nifty. Now you can see these are the contracts. Same way you can go for Bank Nifty. Okay, so every contract has its own lot size. For example, if I want, I can go for Bank Nifty as well. Expiry date will remain the same. Okay, and if I want to buy this June month, then Bank Nifty, Bank. Okay, if you want, you can go for. So Bank Nifty has a lot size of 30 rupees, 30 pint. Okay, so if you like to go for buy or sell, you have to say pay the same amount. Okay, so you can see the price of Bank Nifty is this one, 58243. Okay, 58243 multiply by 30, which is the lot size. Okay, if you multiply this value along with 30, the lot size, this would be the contract value. The contract value is 17 lakh, but you have to pay only 2 lakh rupees. So by paying the 2 lakh rupees, you can buy a contract value of 17 lakh. And if the price is moving in your direction, you will make a profit according to the 30 rupees per pint. For every single pint moving, you can see, if I want show you here. For example, if you go for like Bank Nifty is 30 pint plus today.
So you could have made 30 multiplied by 30, like 1000 rupees, 900 rupees. Okay. Same way you can see these are the different kind of value. So if you want, you can go for this, or this. These are the different indexes are available. Same way you can go for the stock future as well. So we can see one example of stock future as well. So for example, Infosys, I go for Infosys, and if I click here, you can see this is the data of equity market. This is the data of equity market. And there is a segment of derivative. Derivative means future and option as well. This is the option chain as well. Okay. So equity, the price of the equity market is this one, 1041, and it is 15 point down today. Okay. And derivative, if you go for the derivative, you can see these are the most active calls, most active put, open interest, and this is the contact information. Okay. Now same thing we can see, we can go for the stock future as well. Okay. So Infosys may we are only looking for stock future. So we can see these contract parameter, all contract, this is underlying information, and this is the historical data. So first of all, you have to go here, contract, all contract tab, and we have to choose only the future contract. They are both of our contract are showing here, stock future and stock option. We have to select only stock future right now. Okay, now we can see this is the expiry date. So these are the three expiry available: June, July, August, same. Okay, we are not looking for option, so these are the not highlighted here right now. So we can see the price of the 28th July would be 1063, and you can see this is the spot price. So there is a difference between the spot and the future price. This is 1063, or you can see this is 1036 is the last price. This is 43, this is 35. Okay, so here you can see this is the future price. So you have to pay according to this value. Now for this example, if I say if you go for the stock future, okay, the stock future. So we can see one of the example of Infosys. Like Infosys is currently trading around 1042 मान लेते हैं, ठीक है, it would be 1042. Okay, and the lot size of Infosys is 400. So if you purchase the 400 shares in the cash market, you have to pay 1042 multiplied by the 400. Okay, so 1042 multiplied by 400, it means you have to pay 4,16,800 rupees to buy 400 stocks of Infosys. Same thing, we can go for the stock future. So we can buy the Infosys future for current month, for the next month, or we can go for the next month as well. Okay, so if I go for the July month, okay, now you can see these are the different price for the July, June and August. So June के लिए you have to pay this one, and for the July and August the price is less than the current market price. This is the spot price, and you can see the price of the Infosys is less than the current market price. It means the price of the Infosys is available at a discount. So if the price of the future is less than the, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, price of future is less than the spot price, it means it is trading at a discount. Okay, तो हम बोलते हैं ये डिस्काउंट पर मिल रहा है. And if the price of the future is more than the spot, so we call it at the premium.
तो फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पे, तो मोस्टली जो है फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पे ही मिलता है. यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर making a contract. But if the market is bearish about the particular stock or index, so it may also possible that stock is available at a discount price. So for the July month, we have to pay only 1036. Okay, so here you can see, yeah, this is 1035 for the August series, and for the July you have to pay 1036. Okay, so 1036 multiply by the, ठीक है, 1036 multiply by 400 equal to this one. So this is the contract value. This is the contract value. Okay, so this is the contract value. But now you can see there is a difference between the spot price and the future price. So if you buy the same stock in the cash market, you have to pay 4,16,000. But if you are buying a future of this, you have to pay only 4,14,000. Still, you are making a profit of 2,000. Now, you don't need to pay this much amount. If you want to make a contract, you have to pay only, I am using future and selecting the Infosys. So if you go for just July, you can see this is the lot size. If you buy this particular contract, you have to pay only 80,000. Now the contract value is more than 4 lakh, but you have to pay only, this is the premium you are paying. This is the actual value of the contract, and but you are paying only, you can say like 20% of this. Okay, you have to pay only 80,000. Okay, so by paying the 81,000, you are making a contract of 4 lakh. And if the price of Infosys is increased by 1 rupee, you will make a profit of 400. For every 1 rupee, you will make a profit of 400. For every 10 rupees, you will make a profit of 4,000. For every 100 rupees change in the Infosys price, you will make 40,000. Same thing for the negative direction. If the price decline by 1 rupee, there would be the loss of 400 rupees. If the price is declined by 10 rupees, the loss would be minus 4,000 rupees. And if the price of Infosys declined by 100 rupees, the loss would be 40,000. The price, so now you can see the profit and loss both are going in the same direction. If you are making the profit of 400 rupees, the loss would also be the 400 rupees if the market is not going in your direction. If you are making a profit of 4,000, so if the market is not moving your direction, the loss would also be the same. But not in the case of option contract. In the option contract, profit and loss can be different. It can be limited or unlimited as well, according to the strategies. Now, now you can see these are the different things available. Okay, so on in the second tab, now this is the tick size. Tick size is known as the minimum movement is the price. So you can see like 1042 by 90. So next tick size would be 10 paisa. So it would be like 80 paisa, or it can be like 43, 1043. So tick size is the minimum movement in the price. Okay. This is the volume freeze quantity. Okay. And this is the underlying. Underlying means the cash market ka price kya hai right now. Okay. Now in the second tab, this is the underlying information. Okay. So we can see on the monthly basis the market capitalization and daily volume in the last 6 months. Now you can see the price. This is the month data: July, August, September, October, November, and December. And you can see the market cap of Infosys. And here you can see the volume average, number of share जो ट्रेड होते हैं in the last 6 months. ठीक है.
Now here you can see the maximum volatility. Volatility means the difference between just wait, the fluctuation in the price. The maximum volatility is 1.9, 1.59, and minimum volatility is 1.48, and the average is 1.54. Okay. Now this is the volatility, and here on the another tab is the historical data. Historical data may you can see the price of Infosys according to the one data, 1 week, 1 month, or 3 month. Okay. We can go for more as well, but 3 month would be enough if you are making a contract. Now you can see the 1 month data. Okay, you have to select stock future, current month, current year, expiry. My expiry is already निकल चुकी है, ठीक है. We can go for the June. Now here you can see the data is loading. There is some problem with the charging. Okay. Now here you can see this is the data on the daily basis. Okay. So this is 25th. आज का data इसमें upload नहीं है. That will be updated in the evening. Here you can see 24, 23rd June, 22 June, and so on. So what is the price? Open price, high price, low price, closing price, last price, settlement price, and the volume. Number of contract. Here we'll see the number of contract which are traded on this particular day, and the value of this contract in lakh. And this is the premium, the value of the premium. Okay, so these are the number of contracts which are traded on this particular date or see. Now we can see this is the difference. Now this is the price increasing or decreasing. Here you can see on the 23rd June the price is this, and on the 24th June the price is this, and again today the price is declined by 13 rupees. So you can see the price is fluctuating. Okay, the price is decreasing. Here you can see in the starting of the month, starting of the contract, you can see the price of the Infosys was this, but later on here the price is increasing, again the price is increasing. Now you can see there is a fall in the price, 1271, 1211, the price is also decreasing, and after that the price is decreasing day by day. Okay, here you can see the price is moving in the negative direction. Small doubt, sir. Yes, tell me. Small doubt, sir. Yes, you can ask. Sir, you showed volatility of Infosys, no, sir? That is 1.3. Yes. Means what is the maximum volatility it can be there in a year, sir? Like it is an average volatility in a year. But if you see in sometimes stock moves very uh, volatility will be very high. What is the maximum ratio, sir? See, it cannot be defined. Volatility is according to the fluctuation of the price, how the stock is falling in a particular Yes, day or in a particular month or in a particular yes, time frame. Okay, yes, sir. so we can only calculate the average of 3 month, average of 6 month, or Yes, average of 1 year. Okay, so if the price of right now the price is like 1024, so yes, sir. 1% down would be, the 10% would be 100 rupees, and Yes, sir. 1% would be like 10 rupees. So we can see the average price is 10 to 15 rupees. So here you can see the 13 rupees is down today. So that 1.5 or 1.27 is the average volatility in a year. Yes. In a year, sir. Okay. Now here you can see these are the volume, number of share which are traded today. Okay, and so this is the data. Now you can see all the stock which are available here, like Infosys. There are different. Okay, so you can see the historical data as well, and right now which contract are more popular. So you can see most active call here, most active puts here,
These are for the options. And most active contract by open interest. Okay. Now here you can see the historical data as well, here as well. Change in open interest, you can see this data as well. You can see the most active contract here as well. You can see the option chain in the option segment only. So this is the derivative. And historical report as well, you can see. So you can see like contract wise price volume data, average data, monthly data. So here you can see commodity data as well. And this is the daily report. So here you can find the different kind of daily report of any particular equity or derivative. Here is the derivative. Okay. Now again I'm coming for the option. Okay. So this is the future contract. Now I'm going to discuss the options. Okay. तो ऑप्शन जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जस्ट वेट. Now we are talking about the options. Option means a choice. ठीक है. तो option is also a derivative contract. Option is also a derivative contract and which is trade on a particular exchange. ठीक है. This is the exchange traded contract. ठीक है. Just like future, option is also trade on a particular exchange. Okay. So this is also known as a exchange traded contract. And we can further divide option into two segments. One is call and second one is put. Okay. तो ऑप्शन इज जस्ट लाइक अ चॉइस. आपको क्या है, हमने एक चॉइस दी है. ठीक है. या तो आप ये ले सकते हो या आप ये ले सकते हो. ठीक है. तो सेम थिंग, इफ यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट यू कैन गो फॉर द कॉल. ओके. तो एक इंसान कॉल कब खरीदता है? व्हेन यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट. और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यू कैन गो फॉर अ कॉल. सेम वे अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, यू कैन बाय अ पुट. ठीक है. तो जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वेन एवर वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी मेड बिटवीन टू पर्सन. वन इज बायर, सेकेंड वन इज सेलर. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग अगेन एज आई टोल्ड यू, इट इज अ काउंटर पार्टी. काउंटर पार्टी इज रिक्वायर्ड. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उसकी कॉल खरीदते हैं, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम उसकी पुट खरीदते हैं. ठीक है. अब जब हम बाय करेंगे तो कोई ना कोई सेल भी कर रहा होगा. ठीक है. तो एट द सेम टाइम देर आर टू पर्सन. वन इज कॉल बायर एंड सेकेंड वन इज कॉल सेलर. ओके. कॉल सेलर को वी ऑल्सो कॉल इट कॉल राइटर. ओके. तो जब एक ट्रेड बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन निफ्टी. ठीक है. तो निफ्टी ऑप्शन,
निफ्टी ऑप्शन का यूज़ कर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट, तो आपने क्या करा, उसकी कॉल खरीदी। एंड सेकंड पर्सन इज बेरिश अबाउट द मार्केट, तो वो क्या कर रहा है, वो कॉल बेच रहा है। एट द सेम टाइम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है पुट के बीच में, पुट बायर एंड पुट सेलर, एंड पुट सेलर इज ऑल्सो नोन एज पुट राइटर। तो पुट बायर बिलीव दैट मार्केट इज बेरिश, पुट बायर जो पुट खरीद रहा है उसको लगता है कि मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे जाने वाली है। बट जो पुट राइटर है उसको लगता है कि मार्केट जो है नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ही इज बुलिश अबाउट दैट। सेम वे कॉल बायर जो है वो मार्केट को लेकर बुलिश है, बट जो कॉल सेलर है वो मार्केट को लेकर बेरिश है, उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। तो जब दो पर्सन के अलग अलग व्यू हैं, एक बुलिश है एक बेरिश है, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हम किसी भी अंडरलाइन एसेट का यूज कर कर हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो जैसे आपको बताया था मैंने, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स और स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक पर आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए क्या है, वी रिक्वायर्ड अ लॉट, ठीक है। तो इसके लिए लॉट चाहिए होता है, वी कैन बाय इन द क्वांटिटी, ठीक है। वी कैन गो फॉर 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, सो ऑल अप टू योर चॉइस। एक लॉट के अंदर क्वांटिटी जो है वो 65 की है। अगर आप निफ्टी की एक लॉट खरीदोगे इसका मतलब आप उसके पैसे 65 क्वांटिटी खरीद रहे हो। अगर आप इन्फोसिस खरीद रहे हो तो इसका मतलब इन्फोसिस के 400 शेयर खरीद रहे हो, 400 शेयर की वैल्यू को आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, स्टॉक का भी मैं आपको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो लॉट साइज जो है वो 65 का है। थर्ड थिंग क्या है, इसके अंदर भी एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इट हैज़ अ एक्सपायरी डेट एज वेल। एक्सपायरी डेट क्या क्या होती है, एक्सपायरी पहली बात इसकी जो होती है वो वीकली होती है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इट वुड बी वीकली एक्सपायरी, ठीक है। कल आपको बताया था निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली होती है, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो आप हर, ठीक है, एवरी ट्यूसडे एक्सपायरी कब होती है, वीकली होती है, और एवरी ट्यूसडे निफ्टी की अगर हम बात करें, राइट नाउ हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो होती है ऑप्शंस के अंदर वो क्या होती है, दैट इज ऑप्शन चेन, ठीक है। तो पहली चीज वही कि अभी स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस अभी राइट नाउ मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 24,056, 24,056 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो दिस वुड बी नोन एज, दिस इज नोन एज स्पॉट प्राइस या करंट मार्केट प्राइस या लाइव प्राइस, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज करंट प्राइस, दिस इज नोन एज लाइव प्राइस, दिस इज नोन एज करंट प्राइस, स्पॉट प्राइस, ऑल आर सेम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज आ, this is option chain. If I click here, this is nifty, this is underlying price, spot price. Now you can see this is option chain, and here is the date of call and this is the date of put. अब बीच के अंदर क्या है, here you can see this is the strike price, okay. So next thing is strike price. What is strike price? तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक और बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे तक आप निफ्टी को कहाँ देखते हो, किस लेवल पर देखते हो। तो स्ट्राइक प्राइस इज द लेवल यू आर चूजिंग, ठीक है। तो यार यू कैन सी इफ यू आर गोइंग फॉर कॉल, इफ आर गोइंग फॉर कॉल ऑप्शन, यार यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट डेटा, ओके। तो 24,056 चल रही है, यार यू कैन सी 24,000, यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा दिस वन, ओके। तो देर इज अ गैप ऑफ 50 पॉइंट, ठीक है, 24,050 जो कि बिल्कुल राइट नाउ इसके प्राइस है, और उसके बाद 50 पॉइंट का गैप है, 24,100, 24,150, 200, 250 एंड सो ऑन, ओके। तो दिस इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस, ओके। नाउ स्ट्राइक प्राइस कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री थिंग। स्ट्राइक प्राइस कैन बी ITM, ATM and OTM. So these are the three classification of ITM means in the money, ATM at the money, and third one is OTM, out of money. So these are the three strikes available, okay.
ITM means less than the CMP. ITM is always less than the current market price. और ATM means nearest level about the, जो भी नियरेस्ट लेवल होगा, ठीक है, उसको हम एट द मनी बोलते हैं। जहां पर मार्केट चल रही है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक जो होगी, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज OTM। एंड OTM क्या होगी? मोर देन द CMP, जो CMP से ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसके अलावा दो और एक्स्ट्रा हो सकती हैं, दैट कैन बी डीप आउट ऑफ मनी, जो बहुत दूर की हो जाएंगी, ठीक है, और डीप इन द मनी, बहुत जो बहुत अंदर की हो जाएंगी, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, तो करंट मार्केट जो चल रही है राइट नाउ दैट इज 24,056। तो नियरेस्ट क्या हुई? 24,050, ये सबसे नियरेस्ट हुई, दिस विल बी द नियरेस्ट वन, तो दिस विल बी कंसिडर एज एन ATM। उसके बाद ये जो ग्रे में आपको दिखाई दे रहा है जिनका प्राइस कम है, 24,000, 23,950 एंड सो ऑन, दिस ऑल आर द इन द मनी, ये सारे इन द मनी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो करंट मार्केट प्राइस से कम है, ठीक है, ये सब कम है ना, 23,800 जो है 24,000 से कम है, ठीक है, तो दिस इज इन द मनी। अब जो बहुत अंदर की हो जाएगी, मार्केट चल रही 24,000, हम देख रहे हैं ये वाली 22,000, तो ये बहुत दूर की होगी ना, दिस इज डीप इन द मनी। इन द सेम मैनर हियर यू कैन सी 24,000, ये CMP हो गया, एट द मनी होगा, ये जो दूर के लेवल है दीज आर द आउट ऑफ मनी, ओके। 2400, 24,150, 24,200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड सो ऑन, तो दीज आर द आउट ऑफ मनी। और अगर हम बहुत दूर की बात करें, मार्केट 24,000 चल रही है, हम देखें 26,000, जो कि हमारे प्राइस से बहुत दूर है, दैट इज डीप आउट ऑफ मनी। अब इसका क्या मतलब होता है इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी का, कि आप जितने नियरेस्ट लेवल की खरीदोगे या जो इन द मनी की खरीदोगे, इन द मनी जो होगा वो कॉस्टली होगा एंड आउट ऑफ मनी जो होगा वो थोड़ा चीपर होगा, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ मार्केट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ निफ्टी कहाँ पर बंद होगा, आपने कहा यहीं पर बंद हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, ठीक है। बट यहाँ तक जाने के लिए, 200 जाने के लिए इसको 150 पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक या ट्यूसडे जब आएगा, अब कल तो छुट्टी है मुहर्रम की, टुमारो वुड बी हॉलीडे, तो मार्केट बंद है, सैटरडे भी मार्केट बंद होती है, संडे भी मार्केट बंद होती है। अब वी हैव ओनली 2 डे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो मंडे मार्केट कहाँ खुलेगी और ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगी, तो हमारे पास 2 दिन का टाइम है एक्सपायरी के लिए अब इस वाले वीक के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्यूसडे के दिन मार्केट कहाँ पर बंद होगी, क्या वो 24,100 पे बंद होगी, क्या वो 24,200 पे बंद होगी, या इसके अंदर बंद होगी, वट एवर जहाँ भी। तो इफ यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट, आप क्या करोगे, आप उसकी कॉल खरीदोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है मार्केट इससे ऊपर बंद होगी, ठीक है ना, 24,200, तो उस केस के अंदर आई विल बाय आउट ऑफ मनी, ठीक है। तो OTM कॉन्ट्रैक्ट आई एम बाइंग, ठीक है, 24,200 की स्ट्राइक प्राइस, ओके। नाउ अगेंस्ट एवरी स्ट्राइक प्राइस देर इज अ प्रीमियम, तो आफ्टर द स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीमियम। तो प्रीमियम इज द अमाउंट यू आर पेइंग टू मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज द premium, and that is change according to the change in the price, okay। तो for 24,200 we have to pay only 58 rupees मान लेते हैं, 70 पैसा फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, तो 58 is the LTP or the premium you are paying। and next thing is premium in amount, तो total amount आप कितना पे करोगे, that is 58 multiply by the 65, 65 क्या है, हमारा लॉट है, ओके। तो अमाउंट किससे होता है पे, LTP मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज, ठीक है। तो 58 को जब आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 मल्टीप्लाई बाय 65, इट वुड बी 3,370, 3,300, 3,377 आपको आपको देने हैं, ठीक है, 3,3,370 आपको देने हैं। तो दिस इज द अमाउंट यू आर पेइंग। एंड इफ यू आर मेक बाइंग अ कॉल, अगर आप कॉल खरीद रहे हो,
तो दिस इज योर मैक्सिमम लॉस। अब इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। नाउ वी कैन सी देर आर 3 सिचुएशन। ओके, तो हमने क्या करा, 24,200 की कॉल को हमने बाय किया, कॉल बाय एट द रेट ऑफ 58। ओके, अब इसमें क्या होगा, 3 कंडीशन होगी क्या, या तो मार्केट इसके ऊपर बंद होगी, या इसके नीचे बंद होगी, या यहीं पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इफ द मार्केट क्लोज लेस देन, या यहीं पर बंद हो जाती है, ठीक है, मार्केट क्लोज एट 24,200, ठीक है, उस केस के अंदर क्या होगा, आपको लॉस होगा 58 पॉइंट का। जो आपने प्रीमियम दिया है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपका लॉस कितना होगा, ये वाला, दिस वुड बी योर लॉस। ठीक है, तो इट वुड बी लाइक दिस वुड बी योर लॉस एंड दैट इज योर मैक्सिमम लॉस। ठीक है, इफ द मार्केट, अब यहां से मार्केट अगर इससे नीचे आ जाती है, इफ द मार्केट अगर क्लोज होती है 100 पॉइंट नीचे, या मार्केट बंद होती है 200 पॉइंट नीचे, ठीक है, तब भी जो आपका जो लॉस है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, आपका लॉस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मार्केट नीचे आने पर भी आपका लॉस जो है वो फिक्स है, चाहे मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाए, चाहे मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाए, क्या मार्केट 1000 पॉइंट भी नीचे चली जाए, तो अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी नीचे जाएगी आपको कोई नुकसान नहीं है। योर मैक्सिमम लॉस इज ऑलरेडी डिफाइंड, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, बट अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 24,200 ये हमने खरीदा था, इसके लिए हमने 58 रुपीज़ पे करे थे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ओके, इसको हम कहलाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। ओके, तो 24,200 की हमने कॉल खरीदी, 58 रुपीज़ का प्रीमियम पे करा, तो 24,258 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर दैट विल मेक प्रॉफिट। अब क्या होता है, मार्केट 200 से ऊपर तो जाती है लेकिन 258 के ऊपर नहीं जाती, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मान लो मार्केट जाती है 24,220 पे बंद होती है। ठीक है, अब हमने 24,200 की कॉल खरीदी थी, तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वी आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़, बट हमने क्या करा है, 58 रुपीज़ पे कर रखे हैं, तो 58 तो वहाँ चले गए और 20 हमें मिल गए, तो ओवरऑल हमें नुकसान कितने का हुआ, 38 पॉइंट का। तो स्टिल हमें जो है 38 पॉइंट का नुकसान। तो जब तक मार्केट जो है, अब मान लो 24,250 भी चली जाती है, 50 पॉइंट ऊपर जा रही है, बट हमने 58 रुपीज़ का हमने प्रीमियम पे करा, तो हमें 50 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 58 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, तो एक्चुअल में हमें 8 रुपये का नुकसान है। ठीक है, अब मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इससे ऊपर जाती है, इफ द मार्केट क्लोज अबाउट दिस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, तो 24,000 अगर 300 चली जाती है, 24,300, तो एक्चुअल में हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 100 पॉइंट का, यहाँ पर हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 58 रुपीज़ हमने पे कर रखे थे। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 42 पॉइंट का। नाउ अब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट अब मार्केट अगर और ऊपर जाती है, 24,400 चली जाती है, ठीक है, अब हमें कितने का फायदा हो रहा है, 200 पॉइंट का, 58 रुपये हमने पे कर रखे थे, तो अब हमें कितना हो गया, +142। नाउ यू कैन सी अब हमारा प्रॉफिट जो बढ़ता जा रहा है, अब जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज, इसको आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई बाय 65, 142 मल्टीप्लाई बाय 65। इसी तरह 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है, तो मान लो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भी जाती है तो हमें 6500 का फायदा होगा, 200 पॉइंट ऊपर जाती है तो 13,000 का फायदा होगा, 300 पॉइंट ऊपर जाती है तो 19,500 का फायदा होगा, 400 पॉइंट ऊपर जाती है तो हमें 26,000 का फायदा होगा। ओके, अब हमारा लॉस तो पहले से डिफाइंड है, हमें लॉस इतना ही हो सकता है, और प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है। अगर यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई तो आपको 65,000 का फायदा होगा, और अगर 1000 पॉइंट गिर भी जाती है तो आपको सिर्फ 3,000 का नुकसान होगा। तो योर नुकसान, योर लॉस इज लिमिटेड एंड योर प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट ऑप्शन। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, आपका लॉस और जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो में होता है,
तो अगर 400 का लॉस है तो 400 का प्रॉफिट भी होगा, लेकिन यहाँ पर लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर ऑप्शन, ओके। सेम थिंग वी कैन गो फॉर स्टॉक एज वेल। ये तो हो गया निफ्टी का। अब हर एक का अपना अलग अलग होगा, निफ्टी का अलग होगा, बैंक निफ्टी का अलग होगा, फिर निफ्टी का अलग होगा, सेंसेक्स का अलग होगा, एंड सो ऑन। अब जैसे अगर हम जाते हैं, आज मैंने एक ट्रेड करा था, उसके अंदर 3,000 का प्रॉफिट हुआ, उसी के अकाउंट। हाँ ठीक है ना। तो एक ट्रेड दिखाता हूँ मैं, ठीक है। और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, ओके। जो बताया था ना मैंने, जो क्लाइंट है उनके उसमें अकाउंट में हमने ट्रेड किया था, ठीक है। ये आपका ट्रेड है, एंड होम पे जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का प्रॉफिट है 2,937, ठीक है। सो मैंने आज क्या किया था, सेंसेक्स को खरीदा था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ओके। तो क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, और हियर यू कैन सी, ठीक है। पहले सुबह मार्केट ऊपर गई थी, बाद में वापस से नीचे आई है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका ये 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रेड बना था, ये जो हमने यहाँ पर देखा था, और ये हमारी एंट्री बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज मार्केट इज गोइंग अपवर्ड, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यू कैन सी यहाँ पर एक बड़ा सा आपको दिस वन शूटिंग स्टार दिखाई देता है, दिस इज कंफर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एंट्री प्लान करी, इस रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक का एक बड़ा मूव, ठीक है। सो इन द सेम मैनर, तो ये आज इसकी एक्सपायरी थी, और यू कैन सी यहाँ पे कितना गैप है, 810 से लेकर 80 तक, मतलब मोर देन 800 पॉइंट जो है मार्केट यहाँ से गिरी है अपने टॉप लेवल से। दिस इज द डिफरेंस, 740 पॉइंट। इसका लॉट साइज 20 का है सेंसेक्स का, ठीक है। नाउ यू कैन गो फॉर स्टॉक ऑप्शन एज वेल। अब स्टॉक जो होते हैं बेसिकली, स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है। तो देयर आर ओनली 200 या 220 प्लस स्टॉक्स है जिनमें एफएनओ में काम होते हैं, सब में काम नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, लाइक लार्ज कैप और मिड कैप, उन्हीं में काम होता है, बाकी सब में काम नहीं होता। तो स्टॉक का जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम चूजिंग इन्फोसिस, ठीक है। तो अंडरलाइन एसेट के अंदर हम स्टॉक चूज करेंगे। अंडरलाइन एसेट मतलब जिसके ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हियर हम यू आर चूजिंग स्टॉक, ठीक है। एंड स्टॉक के अंदर हम यूज करेंगे कंपनी लाइक इन्फोसिस, ओके। नाउ इन्फोसिस का जो लॉट साइज है दैट इज 400, ठीक है। तो लॉट साइज है 400, मतलब हम 400 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, 400 शेयर की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ओके। नाउ इसकी जो एक्सपायरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपायरी वुड बी मंथली ओनली, इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। सारे स्टॉक्स की, कोई सा भी स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, वीकली नहीं होती। वीकली बताया था सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की होती है, अदरवाइज किसी की वीकली नहीं होती, बाकी सबकी मंथली होती है। एक्सपायरी सर्कल कितने होते हैं, वही 3 होते हैं, ठीक है। जो है फॉर एग्जाम्पल जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो अगेन फॉर द ऑप्शन एज वेल, हमारे पास 3 महीने की एक्सपायरी हो सकती है मैक्सिमम। अगर आप चाहो तो जून मंथ की बना सकते हो। जून को हम बोलते हैं, जो चल रहा होता है मंथ, उसको हम बोलते हैं नियर मंथ। जो अगला महीना होता है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट मंथ। दिस इज योर नेक्स्ट मंथ। एंड थर्ड वन इज नोन एज फार मंथ, दूर का महीना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ का प्राइस इस महीने बढ़ने वाला है, आप इसी महीने की कॉल खरीदो। आपको लगता है अगले महीने बढ़ेगा, आप अगले महीने की खरीदो। आपको लगता है और उससे अगले महीने बढ़ेगा, आप उससे अगले महीने की खरीदो। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस, ठीक है। फिर अगेन जैसे हमने बताया था, इसके अंदर भी क्या होगा, स्पॉट प्राइस होगा। स्पॉट प्राइस मतलब सीएमपी, अभी सीएमपी क्या चल रहा है इन्फोसिस का, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। एनएससी की साइट के ऊपर जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं इन्फोसिस, ठीक है। तो जैसा आपको बताया था, लाइक दो तरह की आपकी मार्केट है, एक इक्विटी मार्केट और दूसरी वाली ये है आपकी डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है।
तो इक्विटी में इसका प्राइस चल रहा है 1042.90 पैसा, आज ये 13 रुपए डाउन है। ओके, तो दिस इज योर स्पॉट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, अंडरलाइन का क्या प्राइस चल रहा है, दैट इज, ठीक है। सेम थिंग अब हम चूज करेंगे अपना स्ट्राइक प्राइस, कि हमें कौन सी स्ट्राइक चूज करनी, ठीक है। तो अगर आप मार्केट को लेकर बुलिश हो तो आप उसकी कॉल खरीदोगे, और अगर आप बेरिश हो तो आप उसकी पुट खरीदोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन जाते हैं, अब हम इन्फोसिस की, ठीक है, इन्फोसिस के यहाँ पर डेरिवेटिव में जाते हैं। तो जैसे आपको बताया था, यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्यूचर खरीदना है या ऑप्शन खरीदना है। तो फ्यूचर के लिए आप फ्यूचर सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर 3 महीने का फ्यूचर आ जाएगा। एंड अगर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे दैट वुड बी ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल, ठीक है। तो सेम थिंग हम यहाँ पर आ जाते हैं इसकी ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाना है, यू हैव टू क्लिक हियर एंड सेलेक्ट द इन्फोसिस, these are the stocks. So these are the stock available for F&O segment, these are the stock, ठीक है। तो इसी में हमारा इन्फोसिस भी है, just like this, okay। Now you can see the expiry date, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पर एक्सपायरी आ जाएगी, जून जुलाई एंड अगस्त। तो जून जैसे बताया था लास्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, तो ट्यूसडे 30 तारीख का है। सेम वे जुलाई का 28 जुलाई की होगी, एंड अगस्त की 25 अगस्त की होगी, ठीक है। नाउ यू कैन सी 28 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर वो डेटा आ जाएगा, एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं, देन यह पर जाकर हम चूज करते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो दीज आर द स्ट्राइक प्राइस। नाउ यहाँ पर यू कैन सी द गैप इज ओनली 5 रुपीज, वहाँ पर 50 रुपए का डिफरेंस था दो स्ट्राइक के बीच में, यहाँ पर 5 रुपए का डिफरेंस है। 40, 45, 50, 1055, 1066, 65 एंड सो ऑन। अब आपको क्या लगता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूसडे आपने इन्फोसिस को कहाँ पर देखते हो, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन चूज दिस वन, यू कैन चूज दिस वन, यू कैन चूज दिस वन इफ यू आर बुलिश, एंड इफ यू आर बेरिश यू कैन चूज पुट। तो दिस इज कॉल एंड दिस इज पुट, ठीक है। So if you are bearish about, if you are more bearish about Infosys, you can go for put. Okay. ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, ठीक है ना, तो ये है, अब पुट का एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यार यू कैन सी कि आज जो है इन्फोसिस का प्राइस कैश मार्केट में 13 रुपीज़ गिरा है, ओके। तो अगर किसी ने इसकी पुट को खरीदा होता, ठीक है, तो ये जो 15 रुपए की पुट जो थी, ठीक है ना, ये 3 रुपए बढ़ी है। तो इसका ओपन प्राइस कितना था, ओपन प्राइस कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 12 रुपए का था। 9 रुपए 95 पैसे पे ओपन होती है, 17 का हाई लगाती है, 8 रुपए का लो लगाती है। तो इसका मतलब जिसने 15 पे 12 पे खरीदा होगा वो 17 पे बेचता, तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट होता। जिसने 8 पे खरीद कर 15 पे बेचा हो उसको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये इसका पूरा डेटा आ जाएगा, इसको भी अभी हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो लॉट साइज है वो 400 का है। तो हर एक स्टॉक का अपना अपना लॉट साइज होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1024 जैसे बताया 1042 को अगर आप कैश में खरीदते, ठीक है ना, इट वुड बी लाइक दिस। तो 4,16,000 रुपए लगते हैं आपको 400 शेयर खरीदने में इन्फोसिस के। अब हम 400 शेयर ना खरीद कर हम उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका प्राइस वही अगेन 1 रुपये बढ़ेगा तो हमें 400 का फायदा होगा, 1 रुपये नीचे जाएगा तो हमें 400 का नुकसान होगा, ठीक है। नुकसान नहीं होगा इसमें, कॉल के केस में तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हायर वी कैन सी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 1042 चल रहा है, तो वी कैन, अगर हमें कॉल खरीदनी है तो वी कैन गो फॉर 1045 वाला, दिस वन, ठीक है, 1045, ठीक है। अब इसका 1045 का जो प्रीमियम है दैट इज द प्रीमियम इज, ठीक है, प्रीमियम इज 11 रुपये 80 पैसे, ठीक है, 11 रुपीज़ 80 पैसे। और जो अमाउंट आपको पे करना है दैट इज 1180 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, तो अराउंड 4800 के आसपास, ठीक है ना। 11.80 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल टू 4720, ये आपको पे करना है अगर आप इसकी कॉल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू आर अ कॉल बायर यू हैव टू पे ओनली 4720 रुपीज टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
और जो सेलर होगा वो क्या करता है, वो उस प्रीमियम को रिसीव करता है, ठीक है। अब अगेन हमने क्या करा, कितने रुपए पे करे, हमने 11 रुपए 80 पैसे पे करे, ओके। तो व्हाट वुड बी द माई ब्रेक इवन पॉइंट, माई ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी 1045 प्लस 1180, ठीक, 1045 प्लस 1180 कितना हो गया, 1056 रुपये 80 पैसे, 1056.8। दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। तो इफ द निफ्टी क्लोज अबाउ 1056 ऑन एक्सपायरी, तो हमें प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर जाएगा विल मेक अ प्रॉफिट। और अगर ये इसके नीचे बंद होगा तो हमें लॉस होगा। लॉस कितना होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, दैट इज द मैक्सिमम लॉस। एंड अगेन दिस मैक्सिमम लॉस वो तभी होगा जब आप एक्सपायरी तक उसको होल्ड करते हो। इफ़ यू वांट यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस। तो फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया 11 रुपये 80 पैसे के ऊपर, एंड इफ द ट्रेड इज नॉट गोइंग इन योर डायरेक्शन, तो वी कैन पुट अ स्टॉप लॉस। हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मान लो 10 रुपये के ऊपर। तो जैसे ही प्राइस हमारा 10 रुपये आ जाएगा, हम एग्जिट हो जाएंगे, हमें लॉस कितना होगा, 1 रुपये 80 पैसा, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, आपका कंपल्शन नहीं है कि यू हैव टू वेट फॉर द एक्सपायरी। अगर आपको लगता है नहीं, बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी आई विल पॉजिटिव, मुझे लगता है मार्केट इससे ऊपर बंद होगी, यू कैन होल्ड, ठीक है। और आपको लगता है नहीं, देन यू कैन लीव इट। तो मैक्सिमम लॉस वुड बी दिस, एंड इफ द मार्केट इज गोइंग इन योर डायरेक्शन देन यू कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना भी मार्केट ऊपर जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ द मार्केट क्लोज अबाउ 10, मार्केट अगर क्लोज होती है यहाँ पर, ठीक है, तो इट वुड बी लाइक 1060 माइनस 1056.80 पैसा, तो स्टिल यू विल मेक 3 रुपये 20 पैसा मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज, दैट विल बी योर प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, तो अब जितना भी ऊपर जाती है, अब मान लो यहाँ से अगर वो 1100 चला जाएगा तो और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1100 माइनस 1056, ठीक है, सो योर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमें 43 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 43.20 मल्टीप्लाई बाय 400, आप इसको आप दे सकते हो, ये बहुत हो जाएगा, ठीक है, तो मोर देन, ठीक है ना। इट वुड बी 43.20 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल टू 17,280, ठीक है। जितना मार्केट ऊपर जाएगी यू विल मेक अ प्रॉफिट, एंड इफ द मार्केट इज नॉट गोइंग योर डायरेक्शन, तो अगर मार्केट नीचे जाती भी है, तो यहाँ से अगर इन्फोसिस का प्राइस 50 रुपये भी गिरता है या 100 रुपये गिरता है या 200 रुपये गिरता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ योर मैक्सिमम लॉस। इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर जाने पर हमें 40,000 का फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉस पहले से ही कैलकुलेटेड है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, जितना स्टॉक भागता चला गया ऊपर उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसे अगर किसी ने आज सेंसेक्स की कॉल खरीदी होती तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट होता, और जब उसने पुट खरीदी होती तो एट दिस टाइम यहाँ पर उसको एक बढ़िया प्रॉफिट होता, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने इसको किया, यहाँ से यहाँ तक 450 पॉइंट की मूवमेंट थी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप एंट्री बना सकते थे, और यहाँ पर जब ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की थी आज, और यहाँ पर हमें इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इन द सेम मैनर इफ यू वांट यू कैन गो फॉर एनी, देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द वेब, वी वेब बताया था कल आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा था, और हमने यहाँ पर वी वेब लगाया, वी वेब की लाइन को उसने यहाँ पर क्रॉस किया, वी प्लान एन एंट्री, यहाँ पर हमने ये पुट खरीदी, एंड हियर इज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम और वेट करते तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, बट वी एग्जिट एट दिस पॉइंट, इस लेवल के ऊपर एग्जिट कर दिया था अराउंड ईयर, ठीक है। तो स्टिल वी मेक अ प्रॉफिट। तो इन द सेम मैनर इफ यू वांट यू कैन मेक दीज स्ट्रेटजीज, इन स्ट्रेटजीज का हम यूज़ कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज जो हैं वो पढ़ेंगे, देयर आर मोर देन 22 स्ट्रेटजीज जो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ और टर्मिनोलॉजी होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सर यस टेल मी।
Small doubt, sir. Yes. Sir, like we set stop loss in cash market, like when we buy stock, we set stop loss in different way. But in options also, we will be setting the stop loss in the same way, sir. Or do we have any other way to set the stop loss in option No, no, buying? no. It is the same way. If you are thinking that trade is not going in your direction, you can put Yes, a stop loss, okay, yes, and you can exit at any point of time because market has lots of liquidity. yes. Okay, if the market doesn't have the liquidity, then you would like to sell your position, but there would be no buyer. But Sir, because in in cash Indian, market, we will set a stop loss on low of the confirmation candle, right, sir? yes, 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 in the same So, manner, if you in the want, same manner, we will set that see, is the stop loss. what you can do is that basically, for example, if you want, you can select the particular chart of this as well. Now you can see this is the chart of cash market, and if Yes, you want, you can go for the chart of this particular strike as well. So if you yes, want, you can go for example, I have this particular strike as well. yes, Okay, so here you can see. Now this is not the underlying asset. This is the particular call, yes, and this is yes, the chart of this particular call. So if the trade is not going in my direction, you can see, okay, yes, after this particular candle, the price is falling regularly. Okay, so at this point, I can exit here, I can exit here, I can here exit here as well. It's all up to your choice. If the trade is not going in your direction, and if you believe that, for example, if we have 1 month expiry, so it's a lots of time. So sometime it may happen कि on the first week, on the second day, on the third day, market is not at your level, but the expiry, the market close above your level. Okay. In the same manner, for example, if you go for daily chart, so if you make a like say for example, if you take the 77,100 15 minutes chart, sir, yes, there is an inverted hammer, uh, yes, yes, right, hanging man is there. yes, yes, exactly. So after seeing this next Exactly, you can exit. Okay. So if you can see that market at this point of time, market is going in the upward direction, and if you purchase a call, the call value increase from this level set to the this stop loss level. on high Okay. of Margul. Yes, Yes. Okay. You can place a stop loss after this. Okay. So I after can. this shooting star, you can see there is a confirmation, a bigger red bullish bearish candle. Yes, It has yes, suggest me that market is not going in my direction. yes, sir. Okay. So we can exit here, and we can break this particular uh, candle at a lower time frame as well. So if you are doing the checking this on the 5 minute time frame as well, here you can see Yes. the Again, there same. is an Again, hanging there is a, yeah, shooting star, and after this confirmation, I can exit. Okay. after this company. Yes. Okay. Okay. So in the same manner, if I exit at this point, there would not be so much loss. Okay. Yes, sir. And I can make a good profit at this level. But in 15 minutes chart, we will have very big stop loss. See, we can put a stop loss on 5 minute time frame. That would be better because there is a lots of fluctuation at this level and this level. Okay, Okay. There is a difference of more than 100 point here. okay. So if you are doing the scalping, you have to make the quick decisions. Sir, if we are doing in daily time frame, stop loss, in what time frame we can set the stop loss? See, if you are using this for the like So I am using daily time frame for taking the trade. Uh, in see, which basically time? the thing is that ki in index, especially like Sensex and Nifty, Yes, the volatility is too high. yes, Okay. Now you can see this is the daily time frame. Okay. yes, This is the daily time frame. Now you can see there is a resistance here. Okay. yes, The price is failed to cross this particular level. yes, Okay. You can see this thing. So at the daily time frame, the market is trying to go above this level, but is not been able to close above this level. Okay, this is the last time the market fail from this level or coming down from this level. Okay, so this may be the one of the reason the market is not close above this level. अगर इसके ऊपर close हो जाती, that would be better. ठीक है, then we can see market can come up to this level or this level. yes. But it has not closed above this level, then we can put a stop loss here. Okay.
stop loss on resistance level. Yes. Or else we can set stop loss on 75 minutes time frame like this, lower time. See, it's all up to your choice. Okay. Okay. If you are Which looking one will for be the example, better? today is expiry, so I have to exit today only. Okay, sir. If you are making a contract and still there are few days to the expiry, for example, if I go for Nifty, so the expiry would be on Tuesday, so I have still have 2 days. Yes, So I can think about that. Ki maybe possible Monday market will open yes, about this level. yes, So I can wait for that. But for Sensex, so expiry is today itself, so I have to exit today only. yes. Okay, it's And all about the expiry and how many days or how many time is still remaining for the expiry. If you are making the option if we contract, have still more days, then 75 minutes the time frame will be good enough, sir, to set a stop loss. still will wait for the confirmation of at least 15 minutes would be better time frame. Okay, sir. 15 minutes is an ideal time frame for making a decision. Here you Okay. can see this is a 15-minute time frame, and here you can see there is an evening star pattern here. Yes, sir. Evening, sir. After this particular pattern, I will exit. If I make a bullish position, I can exit at this particular time Yes. in intraday trade. Okay. Okay. So I will send you the recording as well. Okay. And Thank you can check in the evening. Okay. Okay. Thank you, sir. Next class would be on Saturday, Okay. same time.